Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we will witness exchange of several memorandum of cooperations. These documents reflect the wide-ranging, multifaceted bilateral cooperation as part of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. We will begin with the exchange of 4 documents pertaining to economic and energy security. These documents include 1. MOC between the Geological Survey of India and the Japan Organization for Metals and Energy Security in the field of geology and mineral exploration. 2. The Memorandum of Cooperation on Pharmaceuticals and Medical Devices sectors between the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers India, and the Health Policy Bureau, Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan. 3. The Memorandum of Cooperation between Ministry of Heavy Industries, India, and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan in the field of batteries. And lastly, the Memorandum of Cooperation between Ministry of Cooperation and Department of Animal Husbandry and Dairying, India, and Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan on the expansion of biogas and organic fertilizer production and utilization for rural prosperity, energy security, and sustainable mobility. These 4 documents will be exchanged by His Excellency Mr. Ono Keiichi, Ambassador of Japan to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. Next, we have the Memorandum of Cooperation between India AI Mission and METI, Japan. This document will be exchanged by His Excellency Mr. Ono Keiichi, Ambassador of Japan to India, and Ms. Nagma Muhammad Malik, Ambassador of India to Japan. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English and Japanese languages. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency Ms. Takaichi Sanae, Prime Minister of Japan, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations and friends from the media. We will now have the press statements by the 2 leaders. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की
साचा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में आज किए गए एग्रीमेंट से हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भी योगदान देंगे। भारत का स्केल और जापान की क्वालिटी को जोड़कर हम अफोर्डेबल, रिलायबल और एडवांस हेल्थ सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानीज इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोज और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानीज कंपनी की संख्या दोगुनी करना। भारत में लगातार हो रहे रिफॉर्म से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है,
जापान की कंपनीज भी इसका लाभ उठा सकती हैं। फ्रेंड, आज के अनिश्चितता भरे युग में भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इससे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की बड़ी ताकत हमारी पीपल टू पीपल टाइज है। हम टैलेंट मोबिलिटी, स्किलिंग और टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अवसर भी बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और स्टार्टअप सहयोग भी सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे। योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक सशक्त और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें। मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमास। Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Takaichi Sanae, Prime Minister of Japan, to give her remarks to the media. 皆様こんにちは。 Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and develop this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strength to become stronger and more prosperous together. In the midst of international affairs in disarray, the establishment of such intercomplementary cooperative relationship has become ever more important. From such perspective, as Prime Minister
Prime Minister Modi and I engaged in discussions over diverse issues, we again were reminded of the many goals we share. And we confirmed to place the following 3 points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative, for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with FOIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. Expansion of maritime security cooperation is especially important for regional peace and stability. Taking the opportunity of our visit, a destroyer of Japan's Maritime Self-Defense Force and an India Navy vessel are planning to engage in joint exercise. We will enhance exercises in the Indian Ocean, promote naval maintenance, repair, and overhaul cooperation, and strengthen equipment cooperation under the Make in India framework. In order to deepen such cooperation, I have instructed the relevant departments to hold discussions and to organize the next Japan-India 2+2 before the end of the year. Second, promotion of Japan-India cooperation in the area of economic security and energy security. As both countries face challenges such as economic weaponization and non-market practices, we need to urgently build resilience in our critical minerals supply chains. Further, in the area of energy security impacted by the Middle East situation, both Japan and India bear the responsibility to provide for region-wide energy security, as I presented in Power Asia. That is why we have released a document for public and private sectors, a joint statement to engage in concrete action for economic security cooperation. Under the Power Asia initiative, we will launch a bilateral dialogue to strengthen India's petroleum stockpiling system. Japan also supports India's membership of the IEA. In the area of energy transition, India has set a goal of leveraging cooperatives to secure energy from cow feces to build 1,000 biogas plants. In order to contribute to its achievement, we are launching the Japan-India Cooperative Biogas for Growth, or CBG initiative. That was introduced by Prime Minister Modi. The third is co-creation of economic growth of both India and Japan through investment and innovation collaboration. This is economic growth. I am committed to realizing a strong economy and aiming to enhance Japan's supply capability and technological capabilities through investment in 17 strategic areas. Prime Minister Modi launched Viksit Bharat, a national goal to become a developed nation by 2047, and is strongly driving India's growth. In this way, we share the goal of making our countries strong and prosperous through investments in the future. Strongly supporting our two countries to achieve such common goals are the business community representatives who are participating in the delegation from Japan. During this visit, around 120 cooperation documents between Indian and Japanese companies, including 2 trillion yen scale investment, were announced.
It is a desire to forge a path toward future in India and Japan through unified efforts of public and private sectors. Next year marks the 75th anniversary of diplomatic relations, and I would like to seize this opportunity to further bring in closer together the people of our two countries. Under the India-Japan Special Strategic Global Partnership, as trusted partners that share strategic direction, together with my bigger brother, Prime Minister Modi, I will lead the India-Japan relations going forward to a new phase. I look forward to welcoming Prime Minister Modi in Japan next time. Thank you very much. Thank you, madam. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this session. Thank you very much for your presence.